Good morning, all, and a very warm good morning to both of our today's speaker and all the participants who have joined for this 2 hour session on this Sunday morning. We are privileged to have two great speakers today to speak on a very different topic, and that is about the forex management. So I formally welcome CA Maulik Shah sir and CA Pankaj Kumar Rathi. Maulik Rajnikant Shah, the co-founder and CEO of Almas Risk Consulting. He's a qualified chartered accountant, cost accountant, and a chartered financial analyst. He has over 26 years experience in the field of finance. He has been a rank holder in CA Inter and CA final exams, as well as CFA exams, final exam as well. He has a rich experience in various fields like banking, treasury, risk management, project finance, management audit, etc. He started his career with Mahindra and Mahindra, and in 2005 joined Rosy Blue India Private Limited, where he worked as CFO of the company till 2012. In 2012, Maulik sir started with Almas, a company formed to offer advisory and outsourcing services in the field of financial risk management, namely Forex, commodities, and interest rate risks. He is on advisory panel of Gems and Jewelry Export Promotion Council for Banking and Treasury. He has been a speaker on the subject of banking and foreign exchange risk management in various forums like Eurofinance, FICCI, iForex, and various CA study circles as well. So with this short and brief introduction, I welcome you, sir, for this today's seminar. We have one more speaker with us, CA Pankaj Kumar Rathi. He is a partner and head treasury at Almas Risk Consulting. He is also a qualified chartered accountant and a chartered financial analyst. He has an overall experience of more than 25 years in financial markets. His previous association was with an infrastructure financing company. He has a significant experience in managing foreign currency and interest rate risks. He heads the treasury division and outsourcing business at Almas. So I welcome both of you, sir, and it would be really our privilege to hear you for next almost 2 hours. Without wasting any further time, I would like to hand over this session to both of you. And participants, if you have any query, you can put those in the query box, or maybe at the end we can have a question answer session. So over to you, sir. Thank you very much, Sachin, for the introduction, and welcome everyone. As Sachin mentioned, both of us, me and Pankaj, represent Almas Risk Consulting. We are a leading risk consulting firm specialized in the area of currency, commodity, and interest rate risk management. We have been in the practice for the last 10 years. Both of us are CA. We have also done CFA. And I think over our career, one of the things which is common to both of us is that we have been a market practitioner. So today's session that we are going to deliver, one, of course, our qualification and the education that we have gone through. The other important aspect is our own experience of being with various corporate across the industries, being with their experience of handling the risk, and all of that experience is what we are going to share with you today. We have our own structure and the format, but I think one thing before I begin the session today in a formal way, just a couple of things. One is it's a virtual platform. Okay, and while virtual platform has its own limitations, we are going to convert those limitations into an opportunity. And as Sachin mentioned, you already have a Q&A box. Okay, I love interactive session. So when I'm delivering anything, imagine a delivery in a physical format where you have participants and you interact with them. You can communicate through various means, including a body language, including an eye-to-eye contact. Unfortunately, that is not something that we have it today on the virtual platform. Having said this, nothing stops us from interacting with each other. And why am I insisting on that? See, today's session is about you.
you have spent your Sunday morning and you will be spending for the next 2 hours with us. Both of us, that is mine and Pankaj, commitment is that at the end of these 2 hours, every one of you take away with them the clear understanding about what the Forex risk management, how do we manage, how do we identify, and you are a chartered accountant. And when you say a chartered accountant, they are a strategic partner to any business. Whether you are in a business, whether you are in a practicing firm, whether you are already employed with any of the corporate, chartered accountant by their qualification brings in the strategic intent because they are able to read and understand the business and the balance sheet. That's really the combination. So end of today's session, one thing which we are committed that you take away that understanding about one of the important and a critical element, which is the Forex risk management, and also build the expertise around it. So that's our commitment, and we will bring forth our experience. And what I expect from you is you pull this participation. Now I know I've seen the flyer. There is a credit of CPE 2 hours. Sachin, barabar hai, main aaj attend karta hu to 2 ghanta. Yeah. So how many of you Yes, are sir. attending? How many of you are attending because you get 2 hours? You can raise your hands and just acknowledge that. Nothing wrong with that, but just if you are really here to get that 2 hours, absolutely fine. But just raise your hand so that we acknowledge that. Be honest about it. Sir, I would like to interrupt over here. Generally, on Sundays, people don't join for CPRs. On Sundays, only those join who have interest in the subject, because Fantastic. people prefer to spend their time with families on Sunday. That Got has it. been our experience, sir. Got it. Got it. Perfect. And even if you are here for a CPR, that's fine. All that my invitation and a request is, it's a very important subject. Pull the participation. So ask questions. There is no format that we have to have a Q&A only at the end of 1.5 hours. आप बीच में भी पूछ सकते हो, हमको stop करके भी पूछ सकते हो. Please feel free. So raise your hand so someone will unmute you and we can interact. So that's what my invitation is. So let's go through the subject. We have, between me and Pankaj, the way we have constituted this entire session is that for first 40-45 minutes, I will cover the basics of risk, hedging tools, the accounting aspect of it, basically the risk management related. And Pankaj will then take on. Pankaj will talk about the Forex liability, which are especially the long-term ones, ECB, which is what his fortes and his expertise are. And he will also take care of market outlook. What are the various factors that impacts the currency market? And I'm sure, जितने लोग आज अटेंड करने आए हैं, एक क्वेश्चन उनके माइंड में जरूर रहता है कि डॉलर रुपये क्या लगता है, किधर जाएगा, in case if you have some familiarity with the subject. तो वो aspect जो है मैं नहीं cover करूंगा, पंकज करेगा. So that's how we have divided between us the two sessions. I have a presentation slide. More than the presentation slide, I will probably talk about it. And as I said earlier, I will expect your interactive questions, answers. So any point in time, someone who has just joined, please feel free to put up your Q&A, raise your hands, we will unmute you and you can speak up. Okay, I remind you once again, it is your session. You are investing to us today. All right. So let's begin from the statement that I made earlier, that as a chartered accountant, we are a strategic partners to the business. Now, from our last 10 years of experience being in the consulting business, one thing that we have realized, see, business has number of variables. Now, one of the key objective of any business is that try and reduce or bring certainty to your business by managing the number of variables. Now, those variables have a business angle to it, financial angle to it, number of things. And any businessman, you ask, even in our kind of a corporate results that we see from a listed entity, what do we expect? We expect that आप एक guidance दीजिए, आप एक predictability दीजिए कि आपकी business कौन से direction में क्या profitability से आगे बढ़ रही है. Now, in the world where there are so many variables and uncertainty, how do you bring those certainty? How do you bring those predictability? Now, if you look at it, the financial risk, the Forex, the commodity, even that has a significant element of bringing uncertainty to the business.
So in our experience of last 10 years, something that we have realized is that there are companies which are at a different stage of this risk management. It's a critical risk. And when I say risk management, all that we are attempting is addressing those risk points in the business, manage it so that your profitability can be more or less certain. No one wants a volatile profitability. No one will like a company which says, एक साल में मुझे 100 crore का profit हुआ, दूसरे साल में मुझे 50 crore का नुकसान हुआ. They are okay with having 50 crore, 60 crore, 70 crore profitability, a stable profitability. So risk management has that contribution to make in bringing the stability of the profitability in the business. Now, with that background, let's understand, because each business, now all of you are, as I mentioned, either you could be an auditor, you could be working for a firm, CA firm, or you could be in the corporates. But each business, before even we talk about risk management, let us understand what the risk is. And I'm going to sort of try and simplify the understanding of the risk. मतलब हम रोजमर्रा की जिंदगी में डे टू डे लाइफ में कैसे रिस्क को देखते हैं. Let's try and connect. And trust me, risk for the corporate is no different than the risk that you and me probably experience in our day-to-day life. And let me explain how. And just to clarify, when now onwards, when I talk about risk, I am specifically talking about a financial risk. And even within financial risk, there are three key risks. First, Forex, the commodity, and the interest rate risk. So in my presentation, in my talk, you will find me covering more of a Forex element, which is what the topic of the session is, but you can actually expand it to cover even the commodity and the interest rates. So these are all the areas that I'll be covering. From Forex liability onwards, Pankaj will take over. The first four aspects is what I will cover. As I keep repeating, feel free to put a questions in your Q&A box. Sachin will pick it up and put it up to me. I'm Sachin, just to sort of, take you on board. I'm not seeing Q&A box right now. Okay. No, it's visible to me. So I will keep a track on that, sir. Yes. So I'm inviting them to put up a Q&A even if as I'm speaking, but you please stop me in case if there are questions and put it up to me. Then I'll take it up. So let's look at the risk first. Like I mentioned earlier, risk for an enterprise is no different than a risk at an individual level. And let me try and explain that with a very simple example. Most of us drive a vehicle. We pay for the fuel. Now look at last 1 year. We have ended up paying, or rather the fuel price itself has gone up from what it was, say, about 100 rupees today at about 115, 120, which is a jump of about 15 to 20 rupees or 15 to 20% also. Now, fuel as such is a combination of crude oil and an exchange rate, because we import the crude oil and then refine it, and then we get the petrol and the diesel. Now हम लोग भी हमारी डेली लाइफ में इससे इम्पैक्ट होते हैं. मतलब मैंने बिकॉज मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ, मैंने 2 साल पहले ये एक एक्सपेरिमेंट किया कि हम लोग सबको एडवाइस करते हैं हेजिंग करना चाहिए आपका रिस्क. तो मैंने बोला हमारा हेजिंग कैसे करते हैं, तो मैंने अपना हेजिंग भी किया घर में. तो आई हैव अ सन एंड अ डॉटर, तो हमने फैमिली में एक थोड़ा कॉन्वर्सेशन क्रिएट किया. बोलता है यार, एंड माय सन ट्राइड टू he kept checking with me, what do you do, Pop, as a business? And I kept explaining him. I said, no point in explaining the theory, let's do the practice. So crude ka contract, if you are aware, it is traded in an MCX, and तभी crude था शायद $35-40. मैं बात कर रहा हूँ कोविड टाइम पे. तो मैंने बोला कि हमारा बजट देख लेते हैं, हम एवरी मंथ में कितना स्पेंड करते हैं फ्यूल के पीछे. तो वी एस्टिमेटेड अबाउट 15 to 20,000 rupees. I have a car and my wife has a car, so दोनों कार की मिला के 20,000 रुपया पर मंथ का आसपास फ्यूल का कॉस्ट आता है. मैं बोला ठीक है, साल का हो गया 2,40,000 रुपीज. अभी पेट्रोल अगर क्रूड ऑयल अगर बढ़ता है तो नेचुरली मेरी फ्यूल की कॉस्ट जो मैं बजट करता हूँ, साल के बिगिनिंग में हम लोग सब लोग सीए है तो बजट करते हैं कि 2,40,000 रुपया मेरा फ्यूल के पीछे जाएगा. तो देन वी सेड ओके, लेट्स डू वन थिंग, let us try and hedge, bring stability. I use the word stability. Let's try and bring stability to this crude
कॉस्ट और द फ्यूल कॉस्ट. सो मैंने जाके क्रूड का MCX का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब टोटल 2,40,000 है, मैंने उसका 50% मतलब 1,20,000 रुपया इक्विवेलेंट का, एंड यू कैन एक्चुअली हैव दैट साइज इन द MCX कॉन्ट्रैक्ट. तो मैंने 1,20,000 रुपीज इक्विवेलेंट का मैंने क्रूड का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया. क्या पर्पस से बाय किया कि अगर इधर से क्रूड ऊपर जाता है तो मैं हेज हूं, और अगर इधर से क्रूड नीचे जाता है तो ठीक है, बाकी का 1,20,000 रुपये में मुझे फायदा मिलेगा, थोड़ा क्रूड कॉस्ट कम होगा. एंड इट सो हैपेंड दैट आफ्टर आई बॉट, एक्चुअली द प्राइसेस वेंट अप, स्टार्टेड मूविंग अप. एंड ये पूरी जब भी मैंने एक्सरसाइज की तो आई टुक माय चिल्ड्रन ऑन बोर्ड, एक्सप्लेन देम कि देखो ये हो रहा है अभी एक्चुअली मार्केट में प्राइस. एंड mind you well, it is not exactly correlated, while I am doing all this just to simplify the concept, but it is not as simple as it sounds like. But get the concept. We exited the MCX contract at a slightly higher price, and by then crude price also had gone up. तो मेरा पेट्रोल बिल ऑलरेडी बढ़ना चालू हो गया था. तो ये 2,40,000 एक्चुअली बढ़ के 2,60,000 तक साल का पहुंच गया. बट मुझे 5 या 10,000 रुपए का वो MCX के कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट मिला. सो टू दैट एक्सटेंट एक जो इम्पैक्ट हो सकता था वो थोड़ा मिटिगेट हुआ. नाउ दैट टू माय माइंड इज अ रिस्क मैनेजमेंट इन अ वेरी सिंपल वे. In fact, I can quote many other examples. Most of you may have children whom you are going to send abroad for study. यही एजुकेशन फीस अगर आप लास्ट ईयर पे करते थे तो 75 रुपीज में, अगर 100,000 भी पे करना है आपको तो 75 लाख रुपीज होगा. आज 80 रुपीज में इट विल कॉस्ट यू 80 लाख रुपीज. हाउ डू यू हेज दैट? यू कैन गो टू द कॉन्ट्रैक्ट, आई मीन MCX or NSE. There is a currency contract. We will talk about all that hedging tools in the later part. But point is, identify first the risk. Only when you identify the risk is then you can talk about how do you manage it. So the first topic that I want to rather reinforce time and again is understand what the risk we are carrying. Enterprise risk is no different. It is complex for sure, but conceptually it is no different than probably what you and me anyway are exposed to. That is currency and commodity. So now let's deep dive into a corporate risk. And what do we mean by? And again, as I said, I will be using Forex as an example, but you can expand it to include commodity. You can expand it to include interest rates. So when I say direct Forex risk, you will have many clients which has imports, which has exports. Now, these are all direct Forex risk. Means that you are importing a material or you are exporting. The Forex fluctuation by the time you place an order or import the goods till you actually pay, till you actually realize, is what you are exposed to as a Forex risk. Now, when I say direct risk, the immediate next element is what is the indirect risk. Now, when I say indirect risk, and here you can see the picture of an iceberg. Why I am saying this? Because आज की तारीख में आप इंडिया में देखोगे तो काफी सारी रॉ मटेरियल इंपोर्ट होती है, लोकल मैन्युफैक्चरर्स है और लोकल ट्रांजैक्शंस भी है. तो काफी टाइम हम लोग डायरेक्टली इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, बट लोकल प्राइस जो है, मतलब आई कैन गिव अगेन एन एग्जांपल दैट लेट्स से इफ यू आर इनटू अ कमोडिटी बिजनेस, लेट्स से यू आर बाइंग एल्यूमिनियम. नाउ एल्यूमिनियम की लोकल प्राइस भी जो है वो कोई लोकल मार्केट डिसाइड नहीं करती है. देयर इज एन इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरनेशनल रेट, there is an impact of exchange rate, which is dollar rupee, and is where you derive the local price. So even if let's say you are a company which is procuring your aluminum from the local market, and you may think that I'm buying in rupees and paying in rupees, am I really exposed? The answer is yes. Why? Because the local price itself is driven by the international price and the exchange rate. So there is an indirect Forex risk. अगर आप लोग मतलब इंडियंस जनरली इन्वेस्ट इनटू गोल्ड, ओके, एज एन इन्फ्लेशन हेज और एज एन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट क्लास. गोल्ड का भी जो आप प्राइस देखोगे तो इट हैज एन एलिमेंट ऑफ डॉलर रूपी. सो वन इज इंटरनेशनल प्राइस, देन द डॉलर रूपी, एंड देन यू गेट अ रूपी कोड. सो व्हाइल यू एंड मी आर प्रोक्योरिंग गोल्ड at 51,000 or 52,000 rupees, but that rupees amount is influenced a lot by dollar rupee level. So indirectly
We may be transacting in rupee, but indirectly there is an exposure which is linked, and which is where we have a dollar rupee linkages. Now, why I'm saying this? Because if you are assessing any company for the risk, the optics may tell you that okay, आपका import है और export है, तो आपको forex का risk है. However, if you go through the line items and slightly double click on that, even there you will find that there is a dollar rupee sitting in that line item, and that is where it is important. And unless you understand the business, unless you identify those elements of risk management can never happen. So risk management की first step है risk को समझना. And again, as a CA, because I've been interacting with CA as an auditor, CA as a colleague, हम लोग बैलेंस शीट साइन करते हैं, हम लोग बैलेंस शीट में आइटम भी देखते हैं कि अदर इनकम, अदर एक्सपेंडिचर, जिसमें फॉरेक्स का गेन और लॉस होता है. नाउ how do you read that element? And this is exactly what I'm going to cover in the accounting impact. But it is important कि वो line item के पीछे एक world है of the forex risk management. And जब तक हम लोग उसको समझेंगे नहीं, तो to give a comment or my view or my assessment about whether company is managing the risk or not may not really be that accurate. So it is important to understand the risk. Let's understand this from a case study, and this is again from our own client on a no name basis. I will share this. मैंने क्या किया इसमें, आप एक ऊपर का पोर्शन देखेंगे, ऊपर का बॉक्स जिसमें है वर्ल्ड प्राइस, एक्सचेंज रेट, इट्स ऑल ओवरसीज फॉरेन करेंसी रिलेटेड, एंड द नीचे का पोर्शन जो है वो है लोकल मार्केट विच इज अ लोकल करेंसी. नाउ ये जो क्लाइंट है, ही इंपोर्ट्स द क्रूड फ्रॉम ओवरसीज, प्रोसेसेस and sells it to the local market. So in a way, if you think about it, he is importing a commodity, he is exposed to the foreign exchange risk because there is an import, so clearly direct forex risk hai. And then he is processing it, 1 week processing time, sells in the local market to the other businesses. Now local market, on the optics it may look like there is no exposure because local trade kar rahe hain. But however, local market की जो pricing है, वो pricing derive होती है international level से. So that is where on the right hand side, if you see, it's a world price and the exchange, and that is what decides the finished goods. So while I am exposed to the direct forex risk on my import side, but even on my sale side, which is not an export, which is not a direct FX risk, but still I am exposed because the prices are linked with world price and the forex risk. So now let's understand the risk management. I mentioned earlier that risk management, when we talk about it, is important to understand the business. So business, each business is unique. Each business can have its own dynamics. So जरूरी है हम business को समझें और business के dynamics को समझें ताकि हम risk को properly identify कर सकें and then उसको manage कर सकें. So हम हमेशा एक चीज को ध्यान में रखते हैं कि एक होता है फॉरेक्स का रिस्क और दूसरा होता है कि वो ट्रिगर कभी होता है. एंड व्हेन आई से ट्रिगर, as a chartered accountant, as an auditor, you always go through the transactions, you go through the transaction cycles, the entire audit trail. There are different events, and वो events को closely monitor करके from a forex point of view, you pick up, while interacting with the business, understanding the business, you pick up an event which identifies a risk. Now let me explain. मैंने एक import LC बुक की, एक होता है ऑर्डर स्टेज कि मैंने LC ओपन किया, ऑर्डर प्लेस किया, क्या वो टाइम पे मेरा रिस्क स्टार्ट हो गया है बिकॉज मैंने कमिटमेंट तो दे दिया है. तो टेक्निकली ये जो कमिटमेंट है, माल आएगा 2 महीने के बाद, शिप होने के बाद 2 महीने के बाद मुझे गुड्स मिलेगा और उसके समझो 3 महीने के बाद क्रेडिट टर्म्स के हिसाब से मैं पेमेंट करूंगा. तो एज सच साइकिल में भी 2 months to receive the goods, 3 months to pay the goods, so total 5 months. So is my cycle 5 months when I say cycle of risk management, or my cycle is only after I receive the goods and then sell it, so only 3 महीने का credit. So actual risk कितना है, and वो जो period identify करना जरूरी है ताकि
हम डिसाइड करें कि मुझे रिस्क मैनेज करना भी है तो कितना पीरियड के लिए करना है. सो लेट मी गिव एन एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल. एक स्टील इंपोर्टर है. सो अभी ये दो जो मैं केस स्टडी प्रेजेंट कर रहा हूं उसमें एक हेजिंग का भी एक एलिमेंट है. हेजिंग के ऊपर हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बट हेजिंग का भी एक एलिमेंट है, तो वो भी हम साथ में कवर कर रहे हैं कि आज एक स्टील इंपोर्टर है जिसने एक एलसी ओपन की है $1 मिलियन की. आज का रेट चल रहा है 79, क्रेडिट पीरियड है 6 महीना. तो ये 6 महीना क्रेडिट पीरियड में अगर हेज करता हूं तो आई हैव टू पे 1.2 रुपी एज अ प्रीमियम एंड देन आई कैन हेज इट. बट what do I advise him for hedging? Do I tell him that you go and right away hedge it, or I understand the business dynamics? And let me go to the next slide and add one more dynamic, that मेरा sell to the local market is linked with the exchange rate, जो हमने आगे के सेक्शन में जो कवर किया. मैं फर्स्ट ये इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास है तो एज ए प्रूडेंट रिस्क मैनेजर I will go ahead and advise him कि $1 मिलियन की आपने एलसी ओपन किया, डोंट टेक द रिस्क. रुपी तो अभी 82 जाएगा, 83 जाएगा, आप $1 मिलियन 79 और उसको हेज कर दीजिए इमीडिएटली अभी. बट मुझे पता चलता है कि उसका जो लोकल मार्केट में सेल्स है, ट्रांजैक्शन जो क्रूड के एग्जांपल में हमने लिया, वो भी एक्सचेंज रेट के साथ लिंक्ड है. तो ये दो सिनारियो सोचिए कि अगर 79 रुपीज में मैंने उसको हेज करने को बोला है और उसने लोकल मार्केट में बेचा, तभी 78 चला गया. एक तो उसको नुकसान होगा हेज पे और दूसरा अपने प्रोडक्ट पे. और अगर 82 चला गया तो प्रॉफिट होगा हेज पे और प्रॉफिट होगा बिजनेस पे. हमारा बिजनेस ना तो एक्सेस प्रॉफिट कमाना है ना तो एक्सेस लॉस करना है. तो ये सिचुएशन में मेरी हेजिंग स्ट्रेटेजी इटसेल्फ विल ऑल्टर एंड आई विल टेल हिम कि अगर आपके पास बिजनेस में वो प्रोटेक्शन है, why I am saying protection, because local market is linked with the exchange rate, then actually hedging की जरूरत नहीं है. So even though you are importing an LC, but because my local prices are linked with exchange rate, business में inherent hedging है, and therefore a financial hedges जो हम फॉरवर्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करें उसकी जरूरत नहीं है. So that's one point I wanted to communicate. एक दूसरा केस स्टडी लेते हैं. अगेन वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी. थोड़ा और एक अलग एंगल है कि मैं एक टेक्सटाइल एक्सपोर्टर हूं. मेरे पास ऑर्डर आया, मैंने माल डिस्पैच कर दिया. क्रेडिट पीरियड 6 महीना है. माल डिस्पैच कर दिया है, मतलब नेचुरली मुझे पैसा मिलेगा. एक्सपोर्ट कर दिया है, क्रेडिट पीरियड है, आज का रेट है 79. एज अ प्रूडेंट हेज और अ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, इट इज वेरी फेयर थिंग ऑन माई पार्ट टू से ओके 79 रुपीज का रेट चल रहा है, मुझे पता है मेरा ऑर्डर भी चला गया, पैसा भी आने वाला है, एंड इसमें अभी और कुछ वेरिएबल नहीं है, तो आई माइट एज वेल गो एंड हेज. नाउ दिस इज ऑल रियल लाइफ केस स्टडीज. ओके, सो नथिंग इज थियोरेटिकल. पीरियड जब 6 महीने का है, 2 या 3 महीने के बाद, एंड ये कोविड के टाइम की बात है कि सडनली देयर इज अ ह्यूज वॉलेटिलिटी. 2 महीने माल बेच दिया है, dollar rupee suddenly shoots up. In those times dollar rupee went up from around 73 74 to 77. माल एक्सपोर्टर के इंपोर्टर के पास पड़ा है, आपके कस्टमर के पास. वो बोलता है आके कि भैया आपने मुझे माल बेच दिया, अच्छी बात है, बट अभी डॉलर रुपी 5 रुपया ऊपर गया है, तो आपको तो फायदा है, तो मुझे आप डिस्काउंट दे दीजिए. और मैं एज एन एक्सपोर्टर बोलता हूँ अरे फायदा किधर है, मैंने तो हेज कर दिया है. तो बोलता है वो हेज किया नहीं किया वो तो आपका प्रॉब्लम है, मैं तो ये देख रहा हूं कि मैं आपको जब भी रेमिटेंस भेजूंगा तभी रेट आपको 5 रुपया ज्यादा मिल रहा है, तो आपको मुझे डिस्काउंट पास करना ही करना है. ना ये बिजनेस रियलिटी है. वी आर इन अ बायर्स मार्केट, in which case for even the long term relationship you will probably end up giving in some discount because of exchange rate. Now then the real question is कि अगर मैंने हेजिंग किया है, जैसे मैंने बताया एज अ प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट में तो सिंपल है, मैं तो हेज करके बैठूंगा. तो अगर आपने हेजिंग किया है, still it does not really serve the purpose. There is no perfect hedge because the business dynamics are different. And why I'm bringing this up, that on one hand we say risk management is good, and on other hand we say there is no perfect hedge. Now risk management is always a balancing act.
you will always find this different business dynamics which will have to be incorporated while formulating any risk strategy. I can't really have a one hedging strategy to one company and copy that for another one, because business dynamics अलग है. कोई buyers market में है, कोई sellers market में है, किसी में आपका competitive advantage है, किसी में किसी और का है. अब ये सब factors को incorporate करके आपको hedging strategy बनानी है. तो ये भी एक important aspect है कि आप risk management hedging क्या strategy से करो. So let me just take a pause here. आपके कोई questions है, you can put it up. I'll just take a sip. No, Maulik sir, no questions till now. I think it's going a fantastic way, sir. Okay, but I'm not happy. I No, want questions. The way you have been explaining, actually, it gives a lot of clarity, sir. In Okay. fact, even for me, after my exams, I am looking into hedging for the first time. So almost a gap of 20 years. But Okay. actually, you are going a great way, sir. No problem. Thanks for your compliment. But as I said, why I'm not happy, because I want an interactive audience. And when you don't ask a questions, either you have reached the pinnacle of understanding or I'm boring. So, okay. But anyway, we'll move on. So Yeah. the next section that I'm going to cover is the hedging tool. Okay. हमने रिस्क की बात की, हमने hedging strategy की बात की, but hedging tools क्या क्या अवेलेबल है. अगर हम डिसाइड करते हैं कि ओके कंपनी को रिस्क है, इंपोर्टर्स को डायरेक्ट रिस्क है या इनडायरेक्ट रिस्क है, तो उसमें हेजिंग टूल्स क्या है, क्या क्या अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स है. नाउ बिफोर वी कम टू द हेजिंग टूल, आई विल रीइटरेट वन मोर पॉइंट. द बेस्ट हेजिंग स्ट्रेटजी is when a business has an inherent hedging mechanism, which means what? That business is, I would say, capable enough to pass on the variability on my various inputs, my various risk to my end consumer. तो आप सोचिए कि आप अगर ऐसे बिजनेस में हो जिसमें इधर डॉलर पी ऊपर जाता है, मैं पास ऑन कर देता हूँ, कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएट होता है, मैं पास ऑन कर देता हूँ. अगर वो बिजनेस में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी है, तो बिलीव मी, यू डू नॉट नीड एनी फाइनेंशियल हेजेस. द फाइनेंशियल हेजेस विल ओनली कम इन एज अ प्रॉक्सी. The first and the most efficient will be the business risk, business hedges. If not, then you will come to the financial. Now, financial hedges के अलग-अलग instruments हैं. Financial hedges, when I say it's a various hedging tools, and हम उसके ऊपर discuss करेंगे कि what are the various hedging tools which are available. Now, predominantly there are. Maulik, there is one question now. हाँ जी बोलिए. But the question is how to identify the factors which would help me decide whether to hedge or not, specifically in a service industry. Vijay Kumar has asked this question. Okay, got it. And thanks for asking, Vijay, and thanks for being the first one to put up this question. You are at least making me happy, if not anything. So, how to identify the factors? So, I'm also reading Pankaj. I saw the question. How to identify the factors which would help me decide whether to hedge or not, specifically in a service industry. Now, service industry has its own dynamics. सर्विस इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पीरियड का रिस्क करना है. सर्विस इंडस्ट्री में चलो पिकअप करते हैं आईटी कंपनीज. सो देयर आर आईटी कंपनीज व्हिच हैज अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का. सो पहले तो आइडेंटिफाई करें कि स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है. अगर प्राइसेस आर फिक्स्ड है फॉर अ मच लॉन्गर पीरियड टाइम, नाउ ये फैक्टर आपको डेफिनेटली कंसीडर करना है अपने हेजिंग स्ट्रेटजी में. सो हाउ टू आइडेंटिफाई का आंसर सिंपल है. बिजनेस को समझिए, बिजनेस के कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को समझिए, बिजनेस के ये बायर्स और सेलर्स मार्केट की मैं बात कर रहा हूं कि कल उठ के समझो डॉलर भी फ्लक्चुएट होता है और आपकी जो आईटी सर्विस जिसको आप प्रोवाइड करते हो, सर्विस जिसको प्रोवाइड कर रहे हो ओवरसीज में, आप क्या उनको रीनेगोशिएट कर सकते हो. बिकॉज क्वाइट अ फ्यू कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आई हैव सीन हैज दिस एलिमेंट दैट मैं समझो आपको $100 कोट कर रहा हूं, for example, just putting some example, $100 per hour or whatever it may be. Now, that costing may change if there is more than 5% fluctuation in exchange rate. Now, if that kind of a provision is there in the contract, then to that extent, at least you can build your hedging strategies. So you can pick up those things and understand the contractual obligation, especially for a service industry. Service industry में एक ही चीज important है, especially if you are an exporter of service. आपकी रुपी कॉस्ट जो है वो इन्फ्लेशनरी होती है, एंड जनरली
अगर आप यूएस कस्टमर को सर्व कर रहे हो या यूरोप कस्टमर को सर्व कर रहे हो, तो उसमें बाय एंड लार्ज प्राइसेस फिक्स रहते हैं. So what you're dealing with is a fixed sales price in the foreign currency, but a inflationary rupee cost. तो ये भी एक और फैक्टर्स है जो आपको इनकॉर्पोरेट करना है. Hope I have addressed the questions. If not, you can still have a follow-up question. In the meantime, I'm moving ahead. So hedging tools की बात करें broadly, एक forwards है, futures है. मतलब forward contract is basically an OTC contract. आपके पास रिस्क है, आप बैंक के पास जाते हो और बैंक को बोलते हो कि मुझे ये रिस्क मैनेज करना है थ्रू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. सो इट्स अ bilateral trade between companies and the bank, which is called OTC. OTC is over the counter. Now these are purely customized because आप बैंक आपके ऊपर क्रेडिट रिस्क ले रहा है because आप उसके साथ एंटर कर रहे हो. एंड ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मार्केट है वो काफी एक्टिव है, लिक्विड है, बैंक और आपके बीच में है. तो there are a lot of customization which are possible with respect to the maturity, the amount, the date, all of that. Compared to that, there is another tool which are available, which is a future contract, which are traded on exchange, and I will cover that as a let me first have. So the basic difference between the forward and the future is forward generally is with the banks as a counterparty, future is with on exchange. So जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया MCX कॉन्ट्रैक्ट, NSE, जैसे आप इक्विटी ट्रेड होता है, इक्विटी जैसे ट्रेड होता है ऐसे करेंसी भी ट्रेड होता है. सो यू कैन ऑलवेज हेज योर रिस्क ऑन द एक्सचेंज मार्केट. ओनली इशू देयर इज यू कैन टेक अ डिलीवरी. सो अगर मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उधर बुक किया एक्सपोर्ट का एग्जांपल, 2 महीने के बाद पैसा आने वाला है, तो पैसा आपके बैंक में आएगा, बट एक्सचेंज आपने हेजिंग आपने लिया है एक्सचेंज में. तो द वे यू विल टू मैनेज इज कि जैसे ही जो दिन पे पैसा आता है वो दिन पे आपको जाके वो हेजेस को कैंसिल करना है. वर्सेस अगर आपने बैंक में ही किया होता तो आप बैंक में जाके बोल सकते हो कि प्लीज आप उसका डिलीवरी ले लो. तो डिलीवरी मैकेनिज्म आर अवेलेबल इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर OTC, not available in the future market. There are other differences as well. Forwards are customized. You can book it for any maturity, any date. Exchange में it's a fixed month end contract. मंथ एंड में कुछ फिक्स डेट है विच इज द लास्ट थर्सडे और फ्राइडे ऑफ द मंथ, एंड वो हिसाब से सब कॉन्ट्रैक्ट पैक्ड होते हैं. दोनों लिक्विड है, बट करेंसी मार्केट में, एक्सचेंज मार्केट में लिक्विडिटी 2-3 महीने की मैच्योरिटी में ज्यादा है. फॉरवर्ड में इवन 1 ईयर का भी आपको लिक्विडिटी मिलेगी, 2 साल 3 साल में भी आप कर सकते हो. मार्केट इज लिक्विड, स्पेशली इन दी OTC मार्केट. OTC में आप काउंटर पार्टी पे रिस्क ले रहे हो, आप भी बैंक पे ले रहे हो, बैंक आपके ऊपर ले रहा है. Exchange में it is an exchange which is guaranteeing the settlement. Therefore, you are not in touch with any of the counterparty who is buying, who is selling. It is all routed through exchange, so it's a very safe mechanism. Exchange has its own risk management by M2M market, mark to market every day. वो हिसाब से आपको फंडिंग करनी होती है. So ये सब basic difference है, but both the platforms are effective platforms for you to hedge it. In fact, currency exchange introduce ही हुआ था स्पेशली फॉर MSME सेगमेंट, जिस बिकॉज उधर आप $1000 का लॉट है. आप ये बैंक के पास जाओ तो शायद आपको मार्केट हेजिंग प्राइस उतनी एफिशिएंट ना मिले, बट एक्सचेंज के पास जाओ तो आप सेम प्राइस है, जो प्राइस में $1 million ट्रेड होता है वही प्राइस में $1000 भी ट्रेड होता है. तो ये सब एडवांटेज है, प्रोज एंड कॉन्स है. देयर आर अदर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ऑप्शंस, आई विल कवर दैट ब्रीफली. स्वैप्स, स्ट्रक्चर्ड OTC ऑप्शंस, these are all some of the hedging tools which are available for corporates to hedge, and even for individual. Like I said, both are not different. एक बेसिक चीज समझ लेते हैं. मैं टाइम भी देख रहा हूँ 9:40 है. पंकज, I'll try and cover it up in maybe max another 10 minutes if that is okay. That's okay, Maulik. I think we have a sufficient time. Perfect. So 9:50 के आसपास मैं आपको पास ऑन करता हूँ. So yeah. USD INR डॉलर रुपये की एग्जांपल की बात करें तो एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि एक स्पॉट मार्केट है, एक फॉरवर्ड मार्केट है. Spot is what is being traded, which is T+2. तो जो भी आप स्पॉट की अगर बात करें, आप नेट डानिया जैसे एक प्लेटफॉर्म का रेट देख रहे हो या CNBC पे भी रेट देख रहे हो, तो ये सभी रेट आपको देते हैं स्पॉट मार्केट, जो आज का रेट नहीं है, 2 दिन के बाद का रेट है. नाउ फॉरवर्ड मार्केट मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जनरली फॉरवर्ड इज ऑलवेज इन पॉजिटिव इन द सेंस forward rates are more than the spot rate. And why is that so? Because again, there is a theory behind it that
forward is nothing but a interest rate differential between the two currency. Here the two currency is USD on one side, INR on other side. USD में interest rates से around 2%, 3% है. INR में interest rate around 5%, 6% है. ये दोनों का जो difference है, say 5 minus 2, 3%. आज का आप forward percentage देखोगे, forward premium का percentage देखोगे, तो it roughly comes to around 3%. So let's put a round figure, 80 rupees अगर है आज, तो 3% is 2 rupees 40 पैसा. 1 year forward rate में आज की तारीख में, आज तो बंद है, मंडे आप देखेंगे तो रफली अराउंड 2 rupees 40 पैसे का आज प्रीमियम 1 year का चल रहा है. So 80 rupees spot plus 2 rupees 40 पैसा. So 1 year rate, what you get is 80 to 40. You can divide that by 12 months. Each month you can say 20 पैसा per month. हालांकि 20 पैसा पर मंथ नॉट एग्जैक्टली होता है, थोड़ा प्लस माइनस 1 or 2 पैसा होता है, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस व्हाट इट मींस इज कि आज अगर 80 रुपीज है तो एक महीने के बाद का रेट होगा 80-20, 2 महीने के बाद होगा 80-40, 3 महीने का होगा 80-60. नाउ व्हाई दिस इज रेलेवेंट? बिकॉज अगर आप एक्सपोर्टर हो और 3 महीने के बाद आपको रेमिटेंस आने वाला है और आप उसको हेज करते हो, तो स्पॉट है 80 रुपीज और आपको मिलेगा 80.60. 20 पैसा ऐड कर दिया तो 80.60 आपका फॉरवर्ड रेट होगा. नाउ थिंक फ्रॉम एन इंपोर्टर साइड, मार्केट तो वही है, तो एक्सपोर्टर बोलेगा मुझे प्रीमियम मिल रहा है बिकॉज रिसीव कर रहा है, वेयर इंपोर्टर बोलेगा कि मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं नेचुरली बिकॉज स्पॉट 80 है और फॉरवर्ड 80.60 है. सो इंपोर्टर्स को हेज करना है तो उसको 60 पैसा एडिशनल प्रीमियम पे करना है, एक्सपोर्टर्स को हेज करना है तो उसको 60 पैसा प्रीमियम मिलेगा. एंड दैट्स व्हाट द मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स आर, बिकॉज रूपी इज अ रिलेटिवली हायर यील्डिंग करेंसी देन अ यूएसडी. सो और एक टूल के ऊपर हम डिस्कस करते हैं एंड उसके बाद अकाउंटिंग इंपैक्ट पे जाते हैं. I will take about 5 minutes to cover accounting impacts. I'm going to rush through options very quickly, maybe because in the interest of time. However, उसके related questions है तो आप जरूर पूछिए, हमारे पास एंड में भी टाइम रहेगा, उसके ऊपर फर्दर बिल्ड कर सकते हैं. जो इंस्ट्रूमेंट है विच इज ऑप्शन. नाउ ऑप्शन का मैं एक रिलेवेंस देना चाहता हूं कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया टेक्सटाइल एक्सपोर्टर का. टेक्सटाइल एक्सपोर्टर ने हेज कर दिया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर दिया और उसने कस्टमर्स ने बताया कि मुझे डिस्काउंट दे दो बिकॉज रुपये ऊपर गया है. अब ये सिचुएशन में अगर मैंने हेज फॉरवर्ड के थ्रू किया है तो क्लियरली मुझे लॉस है. नाउ ऐसे टाइप के सिचुएशन में ऑप्शन वर्क्स द बेस्ट, जिसमें चीज क्लियर नहीं है, कंटिजेंट है, मेरा रिस्क है भी और रिस्क नहीं भी है, मुझे पता नहीं है. ऑप्शन आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है. जैसे आप एक्सपोर्टर हो, मैं थोड़ा जंप कर रहा हूं, प्लीज एक्सक्यूज मी, बट अगर आप एक्सपोर्टर हो और आपको पता है कि डॉलर रुपये ऊपर जा रहा है, वो एक रिस्क है. अगर मैंने आउटराइट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक किया तो, और सिचुएशन भी क्लियर नहीं है, मेरा कस्टमर्स भी रिटर्न कर सकता है, तो मैं क्या करूं? तो मुझे ऑप्शन प्रोटेक्शन लेना है जिसमें मैं पुट ऑप्शन बाय करूं. मतलब आज 80 रुपीज है तो जनरली एक्सपोर्टर्स क्यों हेज करते हैं? बिकॉज 80 रुपीज वाला 75 या 76 या 78 चला गया, वो रिस्क को मैनेज करने के लिए वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करते हैं. तो दूसरा तरीका क्या है कि मैंने 80 रुपीज में एक ऑप्शन पुट बाय कर लिया, जिससे मुझे प्रोटेक्शन तो मिल गया कि अभी से लेके 3 महीने में जब तक पैसा नहीं आ रहा है, अगर डॉलर रुपये 78, 77, 76 जाता है तो मुझे प्रोटेक्शन है. एट द सेम टाइम अगर यही डॉलर रुपये 82 जा रहा है तो मुझे कोई रिस्क नहीं है जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में है. क्यों? बिकॉज 80 रुपीज में मैंने बेच दिया तो 82 रुपीज में नेचुरली मेरा जो भी रेमिटेंस आएगा मुझे 80 में ही मिलेगा, 82 में नहीं मिलेगा. बट अगर मैंने ऑप्शन बाय किया है तो 82 एक्सचेंज रेट है 3 महीने के बाद, तो मेरा inward remittance will get credited at 82 rupees. So in a market parlance, I can say I am participating in an upside. At the same time, I am protected on the downside. This is from an exporter point of view. अभी nothing is free. So naturally, अगर आपको ऑप्शन प्रीमियम पे करना है, बाय करना है, तो आपको प्रीमियम पे करना है.
जो है 56 पैसा। ये सब लाइव मार्केट के रेट है, कल के मार्केट के हिसाब से आइडेंटिफाई किया, बट फिर भी आप देखेंगे तो 56 पैसा मैंने पे करके एक प्रोटेक्शन बाय कर लिया 80 रुपीज का, एंड देन आई एम कंप्लीटली रिलीव, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो ये बाइंग साइड हो गया और पुट ऑप्शन हो गया। अगर सेम चीज आप इंपोर्टर के साइड से देखोगे तो बाइंग कॉल ऑप्शन will give you the similar protection. Now ये सब ऑप्शंस में there are many multiple combination possible है। हर एक स्ट्रेटेजी, हर एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी के अपने पे ऑफ है, एक रिस्क भी है। ये तो मैंने बाइंग साइड से बताया। अगर मैं सेलिंग करता हूं तो then I am exposed to the unlimited risk. So I am focusing only on the buying of options for the simple reason that as a hedging strategy, the best is to buy and not sell. That is giving you protection on the downside. So ये प्रेजेंटेशन है, अगर चाहे तो आप प्रेजेंटेशन मैं आपको शेयर भी कर लूं, बट दिस आर ऑल वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेरियस ऑप्शन स्ट्रेटेजी। उसके रिलेटेड पे ऑफ की बात की है ये स्लाइड में, और सिमिलरली पुट ऑप्शन में है। उसके 2-3 वेरिएशंस है, मैं वो वेरिएशन में अभी के लिए नहीं जा रहा हूँ, टाइम मिलेगा तो हम कवर करेंगे। एंड वो है मैं बाय भी करूं सेल भी करूं, मतलब एज एन एक्सपोर्टर आई में बाय पुट ऑप्शन एंड आई में सेल कॉल ऑप्शन। बिकॉज जैसे पहले बताया कि मैं बाय करता हूं अगर पुट ऑप्शन तो मुझे प्रीमियम पे करना है, तो वो प्रीमियम पे करने का जो इम्पैक्ट है वो कम करने के लिए क्या मैं एक कॉल ऑप्शन सेल कर सकता हूं। एंड कॉल ऑप्शन क्या थिंकिंग से सेल करूंगा, आज का रेट 80 है, मुझे डाउनसाइड प्रोटेक्शन चाहिए, साथ में अपसाइड पार्टिसिपेशन चाहिए, और मैं सोच रहा हूं कि मुझे पता है कि 82 के ऊपर तो जाने वाला नहीं है, अपसाइड पार्टिसिपेशन चाहिए 80 से लेके 82 तक का, बट मैं क्लियर हूं कि 82 पर जाएगा नहीं, तो मैं 82 का कॉल ऑप्शन बेच दूं, ताकि 82 के ऊपर अगर गया भी तो मैं वो अपसाइड में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, बट प्रोबेबिलिटी वो कम है, और वो 82 के कॉल ऑप्शन बेच के जो मुझे प्रीमियम मिलेगा उससे मेरी अपफ्रंट कॉस्टिंग प्रीमियम की कम हो जाएगी। सो दैट इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड हियर, दैट अगर आप कॉल ऑप्शन बेचते हो तो 80 रुपीज में 80 का जो पुट ऑप्शन बाय करने के लिए जो आपने प्रीमियम पे किया है, आप उसकी कॉस्ट कम कर सकते हो। ये वेरियस स्ट्रैटेजीज है, जैसे एक्सपोर्ट के साइड के बताई, ऐसे इंपोर्ट साइड में भी ये सेम स्ट्रैटेजी है। यू कैन डू मल्टीपल लेग स्ट्रक्चर एंड reduce your incidence of an upfront outflow. Now that's something which is there. As I said, if anyone wants a further understanding on that, in the time that is available in the end, we will cover that up. I'm skipping all of this. Let me come to the account impact now, which is the most critical thing for a chartered accountant, because I'm sure आप जितने लोग इधर हो ऑडिट कर रहे हो, आपके सामने एक लाइन आइटम जरूर आता है कि अदर इनकम अदर एक्सपेंडिचर, एंड उसके अंदर एफएक्स गेन और लॉस छुपा हुआ आता है। तो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट दिस लाइन आइटम इज, बिकॉज उसके पीछे की दुनिया समझनी जरूरी है ताकि मैं ये लाइन आइटम को प्रॉपर जस्टिस दे सकूं। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इन अ वेरी सिंपल वे। एक सिंपल ट्रांजैक्शन लेते हैं कि मैंने आज इनवॉइस रेज किया, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सपोर्टर। आज इनवॉइस डेट से मैंने अकाउंटिंग एंट्री ले ली। नेचुरली आज के डेट के बाद जो भी डेट में अमाउंट रियलाइज होगा और वो दिन का एक्सचेंज रेट या तो कैश होगा या तो मैंने फॉरवर्ड किया है तो फॉरवर्ड रेट होगा, ये दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरे लिए एक्सचेंज गेन है या एक्सचेंज लॉस है, एज द केस में बी। नाउ वन थिंग विच यू ऑल शुड नो, something which I have represented to the institute also, that today when you look at any company, there is no uniformity of the rate at which invoices are supposed to be booked. And I'm sure even you would have noticed it. Few company books the invoice at RBI reference rate, some adopts custom rate, someone may take closing rate. So there is no one rate at which इनवॉइसेस आर रिक्वायर्ड टू बी बुक्ड। नाउ उसकी इंपैक्ट क्या आ रही है, अगर मैं कोई कंपनी की बैलेंस शीट स्टडी करता हूं, एफएक्स गेन और लॉस आइटम को डिकोड करता हूं समझने के लिए कि उनका इंपैक्ट क्या है, आई विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड मेक एनी मीनिंग आउट ऑफ इट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर सेम एक्सपोर्टर है, उसने आरबीआई रेफरेंस रेट लिया है
तो वो आज का रेट है, आज का आरबीआई रेफरेंस रेट जो दिन पे इनवॉइस बुक हुआ है। अगर कस्टम रेट लिया है तो कस्टम रेट में भी 60 to 70 पैसा ऑफ द प्रिवेलिंग मार्केट रेट। अगर आपको अगर पता है कि कस्टम रेट महीने में 2 या 3 बार वो अपना रेट अनाउंस करता है, एंड वो वाइड होता है, एक्सपोर्टर्स के लिए कम होता है, इंपोर्टर्स के लिए ज्यादा होता है। नाउ वो सिचुएशन में मैं इनवॉइस बुक कर रहा हूँ, समझो आज 80 रुपीज है, तो हो सकता है कस्टम रेट 79.30 हो। एंड अगर सोच लीजिए कि एक ही दिया 2 दिन के बाद भी उसका पैसा आने वाला है और रेट चल रहा है 80 रुपीज, टेक्निकली कोई एक्सचेंज रेट होना नहीं चाहिए डिफरेंस, फिर भी उसके केस में एफएक्स गेन होगा, बिकॉज 79.30 में मेरा इनवॉइस बुक हुआ है और 80 रुपीज में मेरा रियलाइज हुआ है। तो ये एफएक्स गेन और लॉस को देख के मैं कुछ उसका असेसमेंट नहीं कर सकता हूं, बिकॉज अ लार्ज ऑफ इट लार्जली डिपेंड्स ऑन द रेट दैट आई एम पिकिंग अप फॉर बुकिंग माई इनवॉइस रेट। सेम चीज आप इंपोर्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एवरीवेयर there is no uniformity in booking the exchange rate, and therefore you can't really assess, मतलब fx gain और loss में अगर लॉस है तो आप उसका मीनिंग कुछ नहीं निकाल सकते, गेन है तो भी उसका मीनिंग नहीं निकाल सकते। दैट इज माय सिंपल सबमिशन। क्या होना चाहिए? सिंपल है, एक है मेरे पास अदर इनकम। अगर मैं एक्सपोर्टर हूं और इनवॉइस के डेट से बाय डिफॉल्ट हेजिंग करता हूं, अगर दैट्स माय पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, 100%, बिकॉज फॉरवर्ड प्रीमियम हमेशा ज्यादा होता है, आई मीन फॉरवर्ड मार्केट हमेशा स्पॉट से ज्यादा होता है। एक्सपोर्टर्स हमेशा अदर इनकम में एक्सचेंज गेन बुक करेगा और इंपोर्टर्स हमेशा एक्सचेंज डिफरेंस में लॉस बुक करेगा। However, that will depend on 2 things: A, the accounting practice; second, my trigger date. मैंने कौन से डेट से अपना हेजिंग और रिस्क आइडेंटिफाई किया है। ये जो मैंने बात की वो सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस डेट से अगर मैं रिकॉग्नाइज करता हूं, विच इज व्हाट इन अवर डेफिनेशन आई कैन से अ बैलेंस शीट हेज, क्योंकि जब भी बैलेंस शीट पे वो रिस्क आया मैंने हेज कर दिया। अगर वो बैलेंस शीट हेज मैं फॉलो कर रहा हूं तो ये जो मैंने बोल रहा हूं, और मैं इनवॉइस डेट पे आरबीआई रेफरेंस रेट ही ले रहा हूं, तो 100% यू विल हैव अ सिचुएशन लाइक gain for exporter and loss for importer. That is how it will be. Why? And there is no gain or loss. It is actually a premium cost or a premium income. So this is where the impact on the balance sheet will be. बैलेंस शीट हेज अगर आप कर रहे हो तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके ये आई वांट टू लीव दिस विथ यू फॉर योर एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस कंसेप्ट, दैट इफ यू आर लेट्स से एन एक्सपोर्टर और आपकी साइकिल है 3 महीना, और मान लीजिए कि आपके एक्सपोर्ट रिसीवेबल है 100 करोड़, 3 महीने की साइकिल है, तो एट एवरी पॉइंट इन टाइम यू आर कैरिंग लेट्स से अबाउट 100 करोड़ ऑफ एक्सपोर्ट रिसीवेबल। नाउ ये एक्सपोर्ट रिसीवेबल जो बैलेंस शीट हेज है, अगर मैं हमेशा उसको 100% हेज करके चलता हूं, सो नेचुरली आज फॉरवर्ड प्रीमियम 3% है, तो यू कैन फेयरली अज्यूम कि ये कंपनी की बैलेंस शीट पे बाय एंड लार्ज अगर 3% का प्रीमियम है और 100 करोड़ की बैलेंस शीट है और जिसको मैं हेज कर रहा हूं, तो मुझे एफएक्स गेन और लॉस में क्या अमाउंट दिखेगी, मुझे वो अमाउंट दिखाने की जरूरत नहीं है, बट आप उसको एस्टिमेट कर सकते हो। दिस इज हाउ इट विल बी। इट कैन बी एज सिंपल एज दैट, बट दिस रिक्वायर्स 2 थिंग्स। वन इज बैलेंस शीट हेज, मतलब मैं इनवॉइस के डेट से उसको हेज कर रहा हूं, और सेकेंडली आरबीआई रेफरेंस रेट से मैं इनवॉइस को अकाउंट कर रहा हूं। ये 2 चीज अगर फुलफिल होती है तो ये कंपनी की बैलेंस शीट आप उठा के देख लीजिए, आपको 3 करोड़ एफएस गेन मिलेगा। अगर वो नहीं है तो any of these 2 things may not be happening, or they may not be following any hedging. Let me stop here, hand it over to Pankaj. As I mentioned earlier, you may still have a questions. Please feel free to put it up on a Q&A box. We will have a time in the end. We will take it up from there. Pankaj, over to you. Thank you very much for your listening and attention. थैंक यू मौलिक, थैंक्स अ लॉट। आपने मुझे अच्छा ब्लॉक बिल्ड करके दे दिया है, सो आई कैन टेक इट टू नेक्स्ट लेवल। सो अभी तक जो भी मौलिक ने बात की वो बात की एक जनरल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। मैं जो बात करने वाला हूँ वो थोड़े मीडियम टर्म से लॉन्गर टर्म की बात करने वाला हूँ, विच इज बेसिकली व्हेन वी रेज अ लायबिलिटी। अभी आप हमेशा सुनते होंगे कि जो भी एक्सपोर्टर है या इंपोर्टर है
उसको बहुत सारे लोग एडवाइस करेंगे कि आप है ना फॉरेन करेंसी में लोन ले लो, आप क्यों रुपी में लोन लेते हो? क्योंकि जनरली ये माना जाता है कि फॉरेन करेंसी लोन्स आर चीपर देन द rupee loan, but they come with a risk. And what is that risk is basically we will speak about, and वो कैसे hedge कर सकते हैं उसकी भी बात करेंगे, और हिस्टोरिकली क्या ट्रेंड रहा है उस रिस्क का, और कैसे पब्लिक मैनेज करती है. So when I say foreign currency liability, basically a FX denominated loan. It can be dollar, it can be GBP, it can be JPY, it can be euro. The people who have borrowed in euro in last couple of years, or maybe 1.5 year, they have got full benefit of that because euro has depreciated. और ये loans generally आप देखोगे तो 3 से 6 महीने के ज्यादा के होते हैं. इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं, बिकॉज ये चीपर तो हैं, बट इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि रुपी डेप्रिसिएट हुआ तो इनके कॉस्ट बढ़ जाती है. सो वी विल कर ऑल ऑफ दीज. एडवांटेजेस बेसिकली दे आर लॉन्गर टर्म फाइनेंसिंग. जनरली इंडिया में कोई भी फाइनेंसिंग होती है वो 1 से 2 साल 3 साल की होती है, बैंक जो देते हैं. बट ECBs कैन बी बोरो फॉर मोर देन 5 years 10 years. RBI रेगुलेशंस लोअर टेनर के ECBs को डिस्करेज करता है जनरली. FCTL फॉरेन करेंसी टर्म लोन है, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स है. इवन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को रुपी लाइबिलिटी को FX लाइबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए अलाउ करते हैं. नाउ ऑल दीज लाइबिलिटीज कैन आल्सो बी मैनेज डायनामिकली. मेरे को आज लग रहा है कि रुपी डेप्रिसिएट होने वाला है, वी कैन बुक दिस forwards, we can buy rupee, and then again afterwards we can open it up whenever we feel that rupee appreciating. So it can be dynamically managed. It's the risk can be dynamically managed. These are basically a good diversification of a borrowing. अगर सब आप पूरी बैलेंस शीट में रुपी की borrowing लेके बैठोगे और ग्लोबल मार्केट में compete कर रहे हो, तो this sign. So there should be a borrowing diversified. And they provide a good debt capital. It's basically आपकी बैलेंस शीट लिवरेज देते हैं, आपके बेनिफिट देते हैं अगर आपका बिजनेस इज एबल टू अर्न मोर देन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. सो इट्स अ वेरी गुड टूल आल्सो. एंड रिस्क है इनमें. रिस्क ये है कि रुपी डेप्रिसिएट हो रहा है, एंड couple of months maybe we can take it from a point where लास्ट ईयर जब फेड ने और FOMC ने बात करनी चालू की कि हम इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे, उसके बाद चाइना and all these things have put rupee under the pressure and oil prices because of this global risk. दूसरा रिस्क इसमें है कि जैसे हमने करेंसी से लोन लिया है तो बाहर के इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने चालू हो गए, if they started moving higher, then there is a risk of further increase in cost. This is a risk sensitivity on foreign currency loan. हमने FX में लोन लिया है, बाहर लोन लिया है, और है ना पे रेट्स ऊपर जाने चालू हो गए, डॉलर रुपी रेट ऊपर, यूरो रुपी रेट ऊपर चालू हुआ है, तो there would be a negative impact. मतलब basically the cost of borrowing will increase. If they go slow, it will be benefiting us. Same way वहाँ की interest rates के बारे में है, same way उनके hedging premium है. मुझे जब डॉलर बाय करना पड़ता है, इंपोर्टर बन जाता हूँ, एंड जैसे मौलिक ने बताया कि इंपोर्टर को प्रीमियम देना, इंपोर्टर को प्रीमियम मिलता है, तो अगर प्रीमियम रेट्स ऊपर जाने चालू है, दे विल बी कॉस्टिंग अस, दे विल बी बेसिकली नेगेटिव फॉर अस. नाउ रुपी एक ऐसी करेंसी है जो कि लास्ट I say that in closer to last 40-50 years it has got a depreciating trend. In between थोड़े पीरियड के लिए अप्रिसिएशन आता है, जहां जहां कर्सर घुमा रहा हूँ आप वहां देखोगे कि वहां रुपी अप्रिसिएट हुआ है, but generally the trend is on a higher side. You can see 2008 closer to 40 rupee per dollar. Now we are closer to 80 rupee per dollar. So in around 14 years rupee value has got become basically a half. हम पहले $1 के बदले में हमको 40 रुपए मिलते थे, और अभी $1 के बदले में 80 रुपए मिलते हैं. 80 रुपए देके हमको $1 खरीदना पड़ता है. The international value against the dollar of increase and the rupee value has reduced. Now this increased the cost of borrowing. Now you can see couple of periods where rupee has appreciated. This is one period where the rupee has appreciated between 2014 to 2016. There is another period between 2008 to 2012. Rupee appreciated. Now think in this period
suppose you have kept your liability open. One, rupee has appreciated from 52 to closer to 45. Plus ये period में आपने forward premiums भी pay नहीं किए. So that gives a significant amount of a saving INR borrowing. Similar way, move depreciating euro against है, but euro के सामने अगर आप देखोगे तो rupee depreciated भी रहा है, depreciated भी, plus at the same it has given chances, it has given a chances of earn money of a rupee appreciate very significantly during the period of 2015-16 and then recent 2021 it appreciated from a to 90 to 80. So these are the where you can save on your cost on the euro borrowing. Euro generally against the dollar भी काफी volatile रहा है. In 2002-2003, dollar against euro was 0.8. Now it moved as high as 1.56. Now again back to closer to parity, closer to 1. This is the currency which has been the most volatile recently due to factor of our Ukraine and the energy price. Euro has taken a major bit. This is one factor which is also important for borrowing foreign currency. And this factor is basically our hedging cost. We hedge a floating rate ECB, a floating rate loan, how much cost we have to pay. And this is the cost which has been very volatile between 4%, 8%, and currently it's around 7%. Even the global interest rates are higher, but we have not gone that higher. India has tried to contain inflation at a lower levels. Dusra is basically, suppose you have to also factor in, there are two type of a cost when we are hedging our foreign currency loan. One, we are paying a cost from a floating to fixed rate of a dollar or maybe FX. And second is between the dollar and rupee, how much cost we have to pay. Now, if you see that between 2012 to 2023, our rates have come down. Our hedging cost of a dollar rupee has come down. It was as high as 6.3% in 2013. Now, if I have to pay 5-year hedging cost, it has come to 3.83%. So that kind of a move has happened in last couple of months. This is the difference between the euro and INR rate because euro had been a interest rate currency than the dollar, and euro के rates भी काफी ऊपर चले गए थे. मतलब यूरो की hedging cost के rates around closer to 7.2, 7.3% थे between 2012-13. Now it has come down to 5%. So generally, अगर आप देखोगे last 1.5 year में what has happened is basically global interest rates have gone up relative to India. India interest rates have not gone that much up. The rates have been biased to go upward everywhere, but Indian cost has been contained relative to US, relative to Eurozone. Now, I'm trying to put up a basically a slide which says that हम प्रीमियम तो 3 और 5 और 7% की बात करते हैं, but currencies have been very, very volatile. Now, what I have done here is the left side is basically this is dollar rupee range between high and low in that year. How much was the range? Now, look at the 2021. The high was closer to 76.80 and the low was closer to 72.50. इन दोनों के बीच का difference 4 रुपए 6 पैसा ही था. But if you look at the 2018, the difference between high and low was closer to 11.25. In 2013, the difference was 16 rupees. Now, premiums are only 3, 4, 5, 6%, but the currency during the year from a low to high has depreciated closer to 29%, 30%. Similar way, if you look at 2013, the euro range between high and low has been 22.84%, 31.58. So I'm saying, I'm trying to put it across कि अगर आपने एक बार foreign currency borrowing ले ली है और हम सोचते हैं ये lower cost ही रहेगी हमेशा, तो वो सच नहीं है, because euro ranges you would have been seen that is in the range of a 10 to 30%, and we need to manage those risks or those depreciation. Otherwise, our P&L will take a big hit. Whenever we are raising a foreign currency borrowing, the important factors to watch or monitor is lots of variable. One is a macro data, how our GDP is doing.
how the US GDP is doing, how the Eurozone GDP is doing, what are our inflation rate, what are the currency rates, or what are the likely movement is going to be in the interest rates. The same way we capture a macro data, we capture a micro data. We keep looking. There are changes in RBI regulations. There have been changes in the swap rates. There have been changes in the Indian swap rates. And FX risk को manage करने के लिए we have also to see how much credit spreads and how much the regulatory charges would be levied by bank. So these are the factors to determine the costing of a foreign currency borrowing, and it's important to keep monitoring on a very regular basis. Whenever we are borrowing a long-term FX borrowing, there are multiple stages. हम borrowing करने से पहले we will sign an agreement with the lender. Before that, we should be evaluating our FX borrowing options versus domestic borrowing. हमें management policy बनानी चाहिए borrowing के लिए. There should be a appropriateness of FX borrowing. If somebody is only having a domestic business and they want to borrow FX, then they should be looking at why they want to borrow FX, whether this is a suitable for their business risk. Looking at the historical data, we should be looking at if suppose rupee depreciate by 15-20%, whether my PNL is ready to able to absorb that cost. There would be a volatility, maybe depreciate by 20%, then appreciate by 10-12%. So all things are very, very important to look into factor pre-borrowing itself on an evaluation stage. Then there's a drawdown stage where we have to go to apply to the RBI. We have to book a contract. We have to plan the cash flows. We have to basically assist conversion of our flows. We have to look at the good rates for the conversion. And there's a drawdown stage and there's a performance benchmarking. So drawdown stage ke baad humko, basically we have to manage the risk. We have to manage the risk according to RBI guidelines. Since we are dealing in FX, RBI guidelines are very, very must to be complied with, to be taking into account. And all these factors are very, very important. And we have been this expertise to look at all these in a very systematic manner. And we keep monitoring all these for our clients. What should be approach towards long-term FX liability? It's a prudent policy that the FX borrowing should be managed, should be monitored against the rupee borrowing. मैं क्या कर रहा हूँ? I'm replacing my rupee borrowing through a FX borrowing. And then we have to look at कि हमने effectively FX borrowing लेके rupee cost को बढ़ाया है या rupee cost को घटाया है, whether we are having a higher cost or lower cost. And that is important to monitor every time. There should be a clear distinction between a revenue item and a capital item. Because revenue item से आपका PNL एक period के लिए impact होगा, but capital item when you are managing, it will have a long-lasting impact. So you should have a different tools and different way to manage both the exposures. In long-term borrowing, you should be taking a slightly more volatility to be absorbed. You should be having a more balance sheet strength to absorb these kind of volatility. RBI has allowed. RBI has been very, very liberal for allowing an FX contract to be booked on a ECB on a foreign currency borrowing. You can cancel, you can rebook, you can take care of your economic risk of the business. And whenever we are borrowing, we should be having a more details about when we are likely to borrow, what will be the rates, how will we be managing it. There should be a well drafted policy before we acting into it. Now I'm shifting to basically a monthly outlook. What is the outlook currently we are having on the global markets? And this is the outlook for August. Until this point of a time, if anybody has any question, how to look at a long-term FX borrowing, how the position should be managed, I would be happy to answer that. We can take at the end of the session also. I will take another 15-20 minutes on a monthly outlook. What is our perspective in the current market scenario, how we are looking at the markets at this point of time. We can continue. We can continue, Sachin? Yeah. Yes. Okay, thank you. We have observed, and I have been in the market for now closer to 25 years. We have seen that whenever the risk aversion happens, which is the current market scenario, where basically people are worried about overall geopolitical risk, and then also a risk on commodity prices related risk, and Fed raising rates or central bankers are raising rate. What we have seen in this kind of a scenario, people generally switch to dollar, and that's what is happening in last 6 months.
people have shifted from all kind of a currency to a dollar currency. Dollar has seen a major significant strength across the currency pairs, whether it's a developed market like Japanese yen, whether euro, whether GBP, or whether it's like an emerging market against rupee, against Chinese currency, against Korean won. So we we see that the people tilt towards dollar, and there is a asset prices increases also happen due to dollar sell assets. The dollar values goes increasing, and that's the we is refer as a dollar cycle, and this is as of now is showing a dollar cycle. Now, what happens is whenever the DXY rises, and DXY is basically a dollar index, which has been comprised of just like we have a Sensex and Nifty against. In Sensex there are 30 stocks, in Nifty there are 50 stocks. The same way there's a dollar index, and there's a six currency, and the major currency is a euro, and then GBP, then JPY, then CHF. All those currencies are there. But whenever we have seen that the dollar index goes higher and crude oil prices also go higher, it impacts both inflation everywhere. It's a CPI and PPI. Now you can look at the scenario. In the 2020, we were in the negative zone. Now that we have got a CPI and PPI. CPI is a retail consumer price. PPI is the basically a prices for the producers, for the manufacturers. Now you can see what kind of impact this is having on inflation. And the inflation currently in US is in the range of 9 to 10%. PPI is 10-11%. CPI is 8.5%. So dollar index is going higher, and crude oil prices is going higher. Generally, dollar is an importer of other, US is an importer of other goods, but when the dollar strength increases, the other asset prices, other cost of the other things also increases. And whenever the Fed rate hikes happen, the real yield also rises. So real yield is basically, sorry, inflation minus interest rates, and the currently real yields, which was in a negative zone, have started going higher. With DXY, what we have seen is that whenever the DXY increases, the gold silver ratio also improves, and the people who start looking for a safe assets then start looking at the other commodity or industrial metals. The likelihood to looking at the other industrial metals reduces, and the gold demand increases. This is one basically a very important factor which the global central banker look at is the unemployment rate, and the US unemployment rate is currently at 6%. Now, there's a perception is basically Fed will want unemployment rate more than 4%. Then they would be thinking that the spending power of people will reduce, and they will try to bring unemployment ratio higher than 4% by increasing interest rate, and that will curb the inflation because people's spending power will reduce. These are business cycle shifts happening, keep happen at one stage when we are into a kind of a place where the risk aversion is there. People don't want to take risk. The bonds become a preferred routes, and stock commodities goes down. Currently what happening is bonds and stocks are going down, and the commodity prices have been going higher. We are probably in the last stage. At one point of a time, everything will bond, stock, commodities, everything will go down, which will happen in a couple of days. And then probably bonds will start getting buying, and the business cycle will keep shifting. Currently, what we are seeing is that there is a Michigan consumer sentiment. This is one of the leading indicator whether the US economy is growing or maybe will be slowing down in coming days. And this index is as low as now closer to 2012. So a good part of economic growth of US probably is going now. The growth is likely to come down, and that's the way people are started talking about in US there could be a recession. The other thing is due to COVID. This is again another leading indicator which is showing up that probably we are heading towards a slowdown or recession is likely to come in US. Now this is one is basically a container cost.
all your exporters and importers would be complaining for last couple of months that the container prices have gone much higher. And that had happened because of a COVID. There was a completely lockdown, and people have adopted just in time inventory. And suddenly when the inventory ran down after the COVID, the economy opened up, everybody was looking for a goods, but goods were not there because they were at the factories of China. And China was having another problem. They were having a COVID. They had a zero COVID policy. And that point of a time, you see that what kind of exponential growth on the freight has happened. Now, these freight costs started coming down, which giving an indication that the global supply chain is getting a balance now. It's not as bad as it was there in 2021 or maybe end of the 2021. After the last policy, the Fed has, according to the Fed conversation, FOMC conversation, there's a likelihood that we will be topping out on the Fed rates closer to 3.4 to 3.5% by February 2023. And then the rate cuts is likely to start happening, and the market has started pricing the rate cuts. Now, these sentiments will keep changing according to what other Fed members are saying, FOMC's members are saying, or the other global economy when central bankers are saying. But as of now, market is pricing that by February 2023, the rates will peak out, short-term rates will peak out, and then the rates will start coming down. One factor which market look at very strongly is the US yield inversion curve. US yields, there are basically every yield curve, whether it's India, whether it's the US or everywhere. The government securities yield curve is very long term. It's up to 40 years to 50 years. In US, the most looked after factor is 10-year minus 2-year factor. If 10-year minus 2 years start converting into a negative territory, start going down, currently it's around 40-45 basis, 10-year minus 2-year, which basically means 2-year yields are higher than the 10 years. In a shorter term, interest rates will be going higher and then coming down. That basically showing that after 1.5 years, 2 years, it's likelihood that the economy will be slowing down, the higher interest rates will not be required. And that's what is the recession indication that it's being observed by the economists that whenever the yield inversion happened, yield curve inversion has happened, is that 70 to 80% says that it will be hitting recession in next 18 to 24 months time frame. That's what is being indicated by this. In US, what is happening, 2-year yield curve is at the maximum, and then the yield curves are going down. That basically says that up to 2 years, the markets will be going, interest rates are expected to go higher, but after that, that will start dipping. Up to 10 years, and even after up to 20-25 years also, it's showing that the interest rates yields are lower than the 2-year. This is one which is basically a factor which also market is looking at. Now, this is the Japanese currency, and the real value of Japanese currency, we are saying that it's a 60%. The current rate is 135. If we look at the model of a RER, the real value should be closer to 100. This sharp reversal can happen whenever the risk aversion takes a big save. It might not go to 100, but 135, 138 would not be sustaining. Japan is the only one place where nobody is talking about interest rate hike. Whether you go to Australia, whether you go to New Zealand, Eurozone, US, India, China, everywhere. China has cut the rates, but other markets are talking about interest rates going higher. Japan doesn't want to increase interest rates. They are saying that our economy does not require interest rates hike. And whenever the other countries were hiking the rates, Japanese currency was weakening, and this is what being indicated. This is one factor which market also look at. These are known as the consumer surveys, and these are known as the manufacturing consumer surveys happening in IFO surveys, manufacturing surveys, and all. These started giving indication by a turning downside. Is the euro is also going to be a very slow environment in coming 3 months to 6 months. Eurozone has got a two kind of a problem. First problem is the higher energy prices, and they won't be able to absorb this high energy prices of Russia in coming days. That is one. And second, till now, Germany was actually a very efficient economy, and that economy was taking care of all the other peripheral economies.
by giving us some kind of a lower interest rate passing on to them. Now, Germany itself, due to the higher energy prices, higher gas prices, they are having a problem. Since after 1991, in 2021, first time it has happened, the Germany is importing more than exporting and becoming a trade deficit country. And that impact has started looking into other countries' interest rates. Italy, Portugal interest rates are much higher than the Germany. And Eurozone, as of now, looking like in a disarray. They are not able to understand what to take care and how to take care. This is another thing is basically look at the inflation and look at the interest rates. Inflation is much higher, but now again, the entire inflation in Euro is more coming out of energy prices, and which is basically a supply driven problem. But Euro is also talking about taking interest rates higher. Now coming to India, India has its own challenges when the markets or global markets are growing and they are expanding. India gets a lots of flows of investors flow, and India has been continuously importing more than exporting. Their trade gap is higher, always persist. But when this slowdown happen, and what happened again is crude oil prices staying higher. Now you can look at the pink line, which is an import growth line, and other is an export line. Basically, the difference between two are widening, and the trade deficit amount is increasing. Now, this is a worrisome. If the crude prices stay at these levels, India will have a challenge to manage their trade account payments, a trade deficit to be fulfilled. And this is clearly showing in the currency. Rupee has depreciated because of this. RBI is trying to hold 80, and they have held for last 1.5 to 2 months. And they are basically selling closer to $2 to $3 billion every week, which they have actually collected when in 2020, when the lots of investor flows came. There are significant amount of investor flows came at that point of time. Yes, Mr. Mohani, you can ask question, please. Sachin, can you? Yeah. Mr. Mohani, can you put the question in Q&A or 1 second? Reshma ma'am, can we unmute Mr. Sir, Mohani? I have give the rights to him to unmute, but he is Okay. not doing the same. Mr. Mohani, you can unmute yourself. Sorry, I don't have any question, but if I have any further question, I will ask Mr. Pankaj Rathi. Yeah. Okay. Thank you. You can continue, sir. Yeah. Okay. So basically, in 2020, when the all economies were expanding, because central bankers have put in lots of liquidity, and India was a great amount of beneficiary of that. And that point of a time, our trade deficit is also reduced, and we were getting a good investors flow. So at that point of a time, RBI did not allow rupee to appreciate. They have absorbed all those liquidity. Now RBI is using those dollars to protect or to hold INR depreciation. And that's what is going on for last couple of months. This is another chart which is showing that in last 7-8 months, and this calendar year itself, we have seen a amount of closer to 25 to 30 billion dollar of outflow through FPIs. July and August have been positive number. We have got around 5 to 6 billion of dollar inflows in investors. India foreign portfolio inflows basically means they are buying Indian equities or Indian debt, and they have been buying last 2 months. They have bought Indian equities, and the amount is around $4.5-5 billion. So the outflow has stopped, inflow has started, but last week we have seen again a dollar strength across the globe and across the currencies. We will be having a Monday, Tuesday. We will see how the rupee behave and how much RBI will try to protect again at 80. This is a RBI or basically RBI declares a rupee valuation in concept of a RER, real effective exchange rate.
and we are only at around 78, 79 rupees, 79 rupees. We are only 2% overvalued than our 5-year average line. So currency is not overly valued that we should be worried about a rupee depreciation too much. But yes, at this point of a time, dynamics are such that we might have an impact on a rupee. This is one way to calculate our foreign currency reserves. In end of 2020, we have reached almost 25 months of import cover. And that point of time, import amount was also very lower. We were importing closer to 25 to $30 billion. And our exposures, our FX reserves have moved closer to 600 plus. Now, post that, the reserves have been started declining. Our reserves have started declining from September 2021. And our imports have also increased. Now, generally, India has not kept FX reserves lesser than 6 to 8 months. So RBI ability to influence rupee if the import cover falls less than 6 months will significantly reduce. I think currently we are around 7.5%, 8%. Currently we are around 10% of our import cover, 9.5, 10 months of import cover, 9.5 to 10 months. This is one, it's basically, I was talking when we were talking about FX liability hedges to be required. And this is between a treasury yields difference. Whenever the treasury yield difference moves lower than 4%, RBI pressure to increase interest rates goes higher because they want to keep rupee attractiveness. Is what happening is Indian 10-year is closer to 720 and the US is to 280. So currently that 4% is still there, but if it goes lower than 4%, we will start increasing the interest rates further. There is a short-term rates between USD FOMC Fed rates and our rates, and currently Fed rates is around 2.5%, and we are at 540. So difference is less than 3%. I will try to keep more than 3.5% for this. This is India 10-year G-Sec yield, which currently at 720. We expect it should be going into the bracket of 750 to 775 in coming days. So what we have seen in 2020, this is a very famous quote. In 2020, there was a liquidity excess, there was a risk assets started overvalued. Lots of money have gone into risky assets. The excess is one direction, will have a excess in another direction, and that's what happening. People are becoming a very, very risk averse, and they are throwing up assets. Equities, Indian equities have done fairly well, but other asset class have not done that much well, and that's what is going on. And we think that at some point of time it will again mean reward. Yeah, that's all from me. I think this is what the last slide. Yeah. And I just want to highlight, which Maulik already covered, how we partners with the CFO or other treasury, and what is our role to bring people from one side where they don't want to do any FX management to totally integrate between currency, interest rates, and commodities, and look at the overall EBITDA level. And that EBITDA level should be lesser volatile. Nobody wants investor do not want the EBITDA level to be very, very volatile as a percentage terms. And we manage those risks. And these are the 3 areas where we can help our colleague fellows in currency, commodities, and interest rates, and our the way we connect with the basically our CA fraternity and the customers through these 3 platforms where we deliver our services. Both partners are there, and that's all from me. Yeah, thank you. Maulik, you want to add something? Since we have a time, I wanted to add one topic, but of course, Sachin. One is Sachin, of course, but if you have any questions, you can take up. But I actually wanted to touch upon a very important aspect of the RBI circular. Yeah, Maulik, you can take that, not an issue. Okay, so I don't have a presentation slide for that, but I will cover it up. These are some of the important circular. 2 circular I want to cover. One, which is, I mean, I will create a background and then come to the circular. See, there is always a question about कि ये जो forex related exposure है, उसमें जो volatility है, how much percentage of your profit
you should really put at risk. So, and this question I'm putting it up because again from a CA fraternity, CA आप ऑडिट करते हो, आप जब भी कोई कंपनी की बैलेंस शीट स्टडी करते हो, लेट्स से कंपनी हैज अ 100 crore टर्नओवर with about say 25% EBITDA, 25 crore, and then there is an element of forex risk, or it could be a commodity risk. So as an auditor, as an independent person reviewing the balance sheet, how will you really assess whether the company is managing the risk prudently or otherwise? Now उसके लिए RBI ने एक बड़ा डिटेल सर्कुलर दिया है. Now and I'm sure all of you must be aware about it, but I'm highlighting this from a different context, and that context is that circular is so very well detailed that even as a CA signing the balance sheet or reviewing the company financials can actually pick up the clue and say, look, this company is exposed beyond their permissible limit. Now let's talk about this circular. So circular is dated, I think, 15 January 2014, and I'm referring to unhedged foreign currency exposure. As your clients would have come to you, this is a quarterly declaration from the company to their bankers. RBI has mandated all the bankers that they have to receive this from the companies which has a foreign currency exposures, and it is called UFCE, unhedged foreign currency. And annually CA को certify करना होता है, quarterly CFO can certify and give it to the bank. Now go through this circular. I'm sure you would have gone through the statement because you must be auditing and you must be certifying it. But actually that circular talks about clearly that आपकी बैलेंस शीट के ऊपर क्या फॉरेन करेंसी रिस्क है, एंड एज अ कंपनी आपने कितना हेज किया है, और जो अनहेज पोर्शन है उसके ऊपर कितना रिस्क परमिसिबल है. तो अगर आप वो टेबल, वो सर्कुलर को ओपन करके वो टेबल अगर आप देखते हो, उन्होंने क्लियरली स्पेल आउट किया है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट 100 रुपीज है तो वो 100 रुपीज के प्रॉफिट के ऊपर फाइनेंशियल रिस्क जो आप अनहेज रखते हो, एक्सपोज रखते हो, 15% से ऊपर नहीं होना चाहिए. नाउ दैट इन अ वे एज अ सीए, एज एन ऑडिटर, गिव्स अस सम इनसाइट दैट अगर मुझे, सो इट्स लाइक आई सेड अर्लियर, 100 करोड़ का एक्सपोर्ट, आई मीन टर्नओवर है, 25 करोड़ का इबिटा है, तो 25 करोड़ का 15% से ज्यादा कंपनी का रिस्क बिकॉज ऑफ द अनहेज एक्सपोजर नहीं होना चाहिए. अभी अनहेज एक्सपोजर का जो रिस्क है उसमें भी उन्होंने एक डिटेल आउट किया है कि इफ लेट्स से कंपनी इज कैरिंग एन अनहेज फॉरेन करेंसी एक्सपोजर, सो टेक द लास्ट 10 years ऑफ वॉलेटिलिटी और टेक द मैक्सिमम वॉलेटिलिटी. सो जैसे पंकज ने एक टेबल दिखाया था जिसमें लिखा था कि क्या डॉलर रुपये और यूरो आईएनआर में वॉलेटिलिटी रही है, क्या रिस्क रहा है. सो उसका भी एक डेटा अवेलेबल है कि लास्ट 10 साल में मैक्सिमम वॉलेटिलिटी कितनी रही है. तो आरबीआई क्या बोलता है कि ये जो मैक्सिमम वॉलेटिलिटी परसेंटेज है जो आज की तारीख में अराउंड 12.43% है, जो 2013 में हुआ था रघुराम राजन आने से पहले. यू मोस्ट ऑफ यू मे बी अवेयर अबाउट इट व्हेन डॉलर रुपये वेंट अप फ्रॉम 53 to 68. तो कंसेप्ट क्या है कि अगर आपके पास कोई रिस्क है जिसको आपने हेज नहीं किया है और वॉलेटिलिटी अगर 12% की आती है जिसमें आपका अनहेज एक्सपोजर के ऊपर 12% का रिस्क या इंपैक्ट नेगेटिवली आ सकता है. सो एग्जांपल के तौर पे अगर आपने 76 के ऊपर कोई इंपोर्ट बुक किया है और आपने खुला छोड़ा है, और समझ लो डॉलर रुपये 12% ऑफ 76, मतलब करीबन से 10 रुपये, 8-9-10 रुपये के आसपास ऊपर जाता है, तो नेचुरली आपके $1 मिलियन पे 1 रुपया मतलब 10 लाख रुपया, 10 रुपया मतलब 1 करोड़ रुपया. तो क्या कंपनी के पास इतनी प्रॉफिटेबिलिटी है कि ये रिस्क को वो एब्जॉर्ब कर पाए? जो वो बोल रहे हैं कि 15%, मतलब मेरे पास अगर आज की तारीख में मैं ये मान के चलूं कि $1 मिलियन पे 10 रुपया मतलब 1 करोड़ रुपया हुआ, और मेरे पास अगर 10 करोड़ का प्रॉफिट है तो ठीक है, 1 करोड़ एब्जॉर्ब हो जाएगा, बट मेरी ईबिटा ही 5 करोड़ की है, तो 1 करोड़ इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क. सो आरबीआई ने ऑलरेडी एक अपना डायरेक्शन दिया है कि आप भी अगर कोई कंपनी को फाइनेंशियल एनालिसिस करते हो, अनहेज फॉरेन करेंसी एक्सपोजर देखते हो, तो उसमें ये
लिखा गया है कि 15% अगर ईबिड, उधर लिखा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नॉट ईबिटा, सो ईबिड के 15% से ज्यादा अगर रिस्क है तो आरबीआई ने बैंक को बोला है कि आप क्लाइंट को पिनल इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो, बोरोवर को पिनल इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो, जिसमें वो स्लैब दिया है 0.15 एक्स्ट्रा, 0.20 एंड ऑल दैट. सो ये बैंक्स और बोरोवर्स फॉलो करेंगे, बट वी एज एन आउटसाइडर, वी एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट कैन एक्चुअली गेट एन इनसाइट इनटू द कंपनी ऑपरेशन कि ये कंपनी की रिस्क कितनी है. सो दैट्स वन एलिमेंट टू एड्रेस हाउ मच ऑफ द रिस्क वी आर probably okay with, so not more than 10 to 15% of your EBIT. और एक सर्कुलर जो है जिसके ऊपर मैं टच अपॉन करना चाहता हूं, एंड वो है 2020 का सर्कुलर, जिसमें आरबीआई ने लिबरलाइजेशन, मतलब जो फॉरेक्स के कमिटेड एक्सपोजर और एंटिसिपेटेड एक्सपोजर को कवर करने के लिए जो गाइडलाइन दी गई है, उसके ऊपर एक लिबरल अप्रोच लिया है एंड बैंक को वो गाइडलाइन सेट किए. नाउ ये सर्कुलर भी एज अ सीए इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आप भी ऑडिट करते हो, आप भी डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हो, काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने इंपॉर्टेंट है, जरूरी है जब भी आप ये सब डॉक्यूमेंटेशन देखते हो. तो सर्कुलर क्या बोल रहा है कि कोई भी कंपनीज के पास दो तरीके के रिस्क होते हैं. एक होता है कमिटेड एक्सपोजर. नाउ कमिटेड मींस दैट यू हैव एन अंडरलाइंग ऑर्डर्स और इनवॉइस जिसके ऊपर आप हेजिंग करते हो, और दूसरा होता है एंटीसिपेटेड एक्सपोजर. यही चीज पहले के सर्कुलर में थी, कमिटेड एंड फोरकास्टेड. आई थिंक फोरकास्टेड था ना पंकज? पास परफॉर्मेंस. पास परफॉर्मेंस. तो उसमें वो गाइडलाइन ये दी गई थी कि आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है, पास परफॉर्मेंस है, तो भले ना आपके पास आज की तारीख में कोई ऑर्डर ना हो, कोई इनवॉइस ना हो, बट आपके पास लास्ट ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड है तो आप जाके बुक कर सकते हो. तो उसको कंपनी ने अभी इस सर्कुलर ने क्लियरली आइडेंटिफाई किया है कि इसको आप एंटीसिपेटेड एक्सपोजर बोलो, कमिटेड मतलब आपके पास अंडरलाइंग है. नाउ ये दो चीज का रेफरेंस रिलेवेंस क्या है? अगर आपके पास कमिटेड एक्सपोजर है तो एज अ कंपनी यू कैन बुक कैंसल, बैंक विल पास ऑन व्हाटएवर कैंसिलेशन प्रॉफिट और लॉस टू योर अकाउंट. अगर आपने एंटीसिपेटेड एक्सपोजर को हेज किया है जिसमें आपके पास अंडरलाइन नहीं है, तो ये एंटीसिपेटेड एक्सपोजर में अगर आपको कोई जरूरत पड़ने पे कैंसिलेशन करना पड़ा तो बैंक के पास ये डिस्क्रिशन है कि अगर प्रॉफिट है तो आपको पास ऑन करे कि ना करे. लॉस तो पक्का डेबिट कर देगी, बट प्रॉफिट अगर आपके कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट पे है तो वो पास ऑन करने के लिए बैंक को डिस्क्रिशन दिया गया है. तो बैंक को क्यों डिस्क्रिशन दिया गया है? बैंक को डिस्क्रिशन दिया गया है टू असेस कि क्लाइंट अनवांटेड स्पेकुलेशन तो नहीं कर रहा है, अंडरलाइन तो है नहीं, एंटीसिपेटेड एक्सपोजर पे उसने कॉन्ट्रैक्ट बुक कर दिया, बाद में कैंसिल किया. अगर वो स्पेकुलेशन कर रहा है, बैंक को डाउट है, तो वो पास ऑन ना करे. However, as a borrower or as a client, as a company, if you justify कि ये मेरी जो कैंसिलेशन है वो बिकॉज पैसा आज आने वाला था, बाद में डिफर हुआ है, या देयर इज अ वैलिड रीजन एंड यू कैन जस्टिफाई थ्रू योर ट्रांजैक्शंस, बैंक्स विल पास ऑन. बट ब्रॉडली ये एक डिस्टिंक्शन दिया गया है. कमिटेड एक्सपोजर अगर आपने बुक किया तो आपको करना क्या है, जब भी आप बुकिंग करते हो बैंक में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तब जाके आपको बैंक को बोलना है कि ये कमिटेड में लेना है, और आपके पास आई थिंक 15 दिन का विंडो है, 15 या 1 वीक पंकज, अंडरलाइन को सबमिट करने के लिए 15 दिन का विंडो है. 15. सो विद इन 15 डेज यू हैव टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, तब जाके आपका ये कमिटेड एक्सपोजर में कॉन्ट्रैक्ट. तो जनरली क्लाइंट कमिटेड में करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है. ये एक चीज बताना चाहूंगा. दूसरी एक चीज जो टच अपॉन करना चाहता हूँ हेजिंग ऑपरेशन में, जो पहले कवर नहीं किया, मैं टाइम है इसके लिए ये सब ऐड कर रहा हूँ. सचिन, यू कैन स्टॉप मी एनी टाइम कि लोगों का पेट भर गया है तो आप बंद कर दो, तो आई विल स्टॉप. बट सिंस आई No, sir. We can continue for 10 more minutes, not an issue. yeah, good. So because I can still see those participants are there, no one has actually left, so I'm just using this opportunity to share as much as I can. So और एक चीज है जो हेजिंग ऑपरेशन के लिए रेलेवेंट है, वो है कि हम अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुकिंग करते हैं, पहले एक टाइम था जिसमें रूल स्ट्रिक्ट थे, कैंसिलेशन पे रिस्ट्रिक्शन था. आपको पता नहीं है कि आपका जो इनवर्ड रेमिटेंस है, मैं एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, कि इनवर्ड जो रेमिटेंस है वो कभी आएगा. मतलब आपने इनवॉइस रेज कर दिया 90 डेज क्रेडिट पे, तो 90 डेज क्रेडिट के बाद वो 10 दिन आगे पीछे भी हो सकता है,
जल्दी भी आ सकता है, लेट भी आ सकता है, ज्यादातर लेट ही आएगा बट लेट भी आ सकता है। तो लोग क्या करते थे पहले, बिकॉज कैंसिलेशन एडजस्टमेंट सब पॉसिबल नहीं था, तो लोग बुक करते थे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक ऑप्शन पीरियड में। सो अगर मुझे पता है कि मेरा 30 सितंबर तक पैसा आने वाला है, तो मैं 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक का कॉन्ट्रैक्ट बुक करूंगा, ताकि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी रहे कि अगर पैसा 30 सितंबर के बदले 10 अक्टूबर को भी आया है, 15 अक्टूबर को भी आया है, तो सेम कॉन्ट्रैक्ट को मैं डिलीवर कर दूंगा, कैंसिलेशन की जरूरत नहीं है। नाउ आज का सिनारियो देखें, जिसमें जो आरबीआई की गाइडलाइन है बहुत ही फ्लेक्सिबल है। अगर आपके पास अंडरलाइंग है, कैंसिलेशन, रीबुकिंग सब अलाउड है। होता क्या है, अगर आपने ऑप्शन पीरियड में बुक किया है तो 10 से 15 दिन जो डिले हुआ है, गो बैक टू द स्लाइड वेयर आई सेड कि एज एन एक्सपोर्टर यू आर रिसीविंग द प्रीमियम, तो आपको वो 10 या 15 दिन का प्रीमियम का नुकसान है। सो मान के चलिए आपने 30 सितंबर का जो मैच्योरिटी वाला आपका एक्सपोर्ट रिसीवेबल है 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक ऑप्शन पीरियड में बुक किया है, और आपके पास 15 अक्टूबर को पेमेंट आया है। सो 15 अक्टूबर 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आपको कोई भी प्रीमियम मिलेगा नहीं। तो उसका ऑल्टरनेट क्या है, जो हम एडवाइस करते हैं कॉर्पोरेट को, कि आप बुक करें एग्जैक्ट मैच्योरिटी के, आई मीन एग्जैक्ट मंथ एंड के लिए और फिक्स डेट के लिए किए। मतलब समझो यही कॉन्ट्रैक्ट मैंने 30 सितंबर फिक्स डेट के लिए किया होता और पैसा नहीं आता है, तो मैं अपनी बैंकर के पास जा सकता हूं और बैंकर को बोल सकता हूं कि 30 सितंबर से, अगर मुझे अभी पता है कि 15 तक आएगा जाएगा, तो 15 अक्टूबर का एक एक्सटेंशन दे दे, रोल ओवर कर दे। तो एक महीने का प्रीमियम अगर 20 पैसा है, तो मुझे 15 दिन का 10 पैसा मिलेगा। सो ये 10 पैसा भी एक एडिशनल मेरे लिए एक इनकम है, और तो 15 दिन के लिए मैं उतना प्रीमियम ले सकता हूँ। ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, इसमें काफी सारे कंपनीज को पता नहीं होता है, इसके लिए उन लोग अभी भी पुराने प्रैक्टिस से डील करते हैं। अगर कभी कभी ऐसा भी हुआ 30 सितंबर का है और मेरा पैसा जल्दी आ गया, 25 सितंबर को आ गया, तो आप यही कॉन्ट्रैक्ट में अर्ली डिलीवरी ले सकते हैं, विच इज कॉल्ड अर्ली डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। और बैंक हो सकता है कि 5 दिन का आपके पास से चार्जेस ले ले। वो चार्जेस क्या होता है, 5 दिन का आपका प्रीमियम जो आपने लिया था वो आपको बैंक को दे देना है। सो पॉइंट इज कि आपको जो रियलाइजेशन डेट तक का प्रीमियम मिले एज एन एक्सपोर्टर। तो ये सब आप कैसे हेजिंग करो, कैसे आप उसको मोस्ट एफिशिएंट तरीके से करो, ये जरूरी है। और काफी ये अपने आप में एक महासागर है। आप मुझे और 2-3 घंटा दे देंगे तो और कुछ मैं बोलते रहूंगा, बट लेट मी टेक अ पॉज हियर। आपके कोई क्वेश्चंस है तो फील फ्री टू आस्क, विल बी हैप्पी टू आंसर। Yeah, participants, if you have any queries, maybe you can raise a question. I have, sir, 1 second. Yeah, Mr. Bijay Kumar has asked a question. Is unrealized forex risk related to balance sheet risk, and how unrealized risk it can be managed? Is unrealized forex risk related to balance sheet risk? Answer is yes. If you have a risk which is not yet realized and it is against a balance sheet item, it is definitely a balance sheet risk. And how unrealized risk it can be managed? So unrealized risk managed so I'm not exactly getting what you mean by unrealized risk. Are you saying it is a risk which will accrue at a later stage and you have already got a commitment? आप एक कर सकते हैं विजय जी, मे बी अनम्यूट करके आप शायद इंटरेक्ट करें, आई विल अंडरस्टैंड यू बेटर। बट प्राइमा फेसी अगर ये रिस्क आपका है जो रियलाइज होने वाला है फ्यूचर डेट में, इनवॉइस्ड हो चुका है, तो 100% वो बैलेंस शीट रिस्क है। आपने उसको हेजिंग नहीं किया है तो बैलेंस शीट रिस्क ओपन है, हेजिंग किया है तो देन यू हैव क्रिएटेड अ बैलेंस शीट हेज। बट if I have not addressed your question, please unmute and speak up so that I can address it more properly. ठीक है, ओके, गॉट इट, थैंक यू। और एक लास्ट एलिमेंट, मैं थोड़ा और टेम्प्ट हो रहा हूँ सचिन, मुझे और 1 मिनट दे दो प्लीज सर। एक और एलिमेंट है जो एज ए सीए आपको हमेशा ये फेस करना होता होगा, वो है हेज अकाउंटिंग। हालांकि हेज अकाउंटिंग एक अपने आप में एक चैप्टर है, बट जो पंकज ने टॉपिक कवर किया ना, जो लॉन्ग टर्म फॉरेक्स लायबिलिटी, जनरली क्या होता है कि मेरे पास बैलेंस शीट का रिस्क है, बैलेंस शीट में एक्सपोर्ट रिसीवेबल है और मैं उसको हेज करता हूं तो सामने मैच हो जाता है सेम टाइम पीरियड में। मतलब मेरा एक्सपोर्ट रिसीवेबल 3 महीने का है, मैंने हेजेस 3 महीने के किए,
तो सामने मैच हो गया टाइम मैच्योरिटी के साथ। बट पंकज वाला जो रिस्क है, जो लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी, अगर आपने ईसीबी लिया है, आपके पास ईसीबी है 5 साल का, और आपने उसको बैलेंस शीट में खड़ा किया है, तो उसका भी जो रिवैल्यूएशन है, वो रिवैल्यूएशन पीएनएल में पास ऑन नहीं करके आप उसको बैलेंस शीट में लेके जा सकते हो, बिकॉज वो टाइमिंग मिसमैच है। आपका एक्सपोर्ट जो है वो फ्यूचर का है, बट लायबिलिटी आपने आज क्रिएट कर दी है। तो नेचुरली आज आपने लायबिलिटी बैलेंस शीट में ले ली है, तो फॉरेक्स फ्लक्चुएशन के हिसाब से लायबिलिटी को रिवैल्यू करेंगे। तो ये जब भी मिसमैच है बिटवीन योर ट्रेड वर्किंग कैपिटल साइकिल एंड एन एलिमेंट ऑफ करेंसी एक्सपोजर, ट्रेड साइकिल 3 महीना 6 महीने की है, बट एक्सपोजर करेंसी का अगर लॉन्ग टर्म है, तो जरूरी है कि आप उसको हेज अकाउंटिंग से शिफ्ट करके एटलीस्ट मैनेज करें पीएनएल की वॉलेटिलिटी। वरना होगा क्या कि आपका ईबीटा जो है सडनली एक मूवमेंट दिखाएगा, which is what probably will make the stakeholders uncomfortable. So then you can use the reserves in the balance sheet and adopt the hedge accounting. So hedge accounting कभी कभी लेनी चाहिए, वो भी एक टॉपिक है डिस्कशन का, but as a CA you should know this. उसके रिलेटेड कभी भी कुछ questions भी है, later on also I think Pankaj has already shared those presentation. You can note down our numbers. Feel free to reach out to us for any of your queries. In fact, वो flyer में भी already हमारे numbers है, but I will actually take a pause here. Final pause. Sachin, आपके लिए. Yeah, thank you, sir. Yeah, so participants, the email ID and mobile numbers are displayed here. You can take a note of these numbers. Because actually, speaking, sir, even at the end of the presentation, I realized that way it's like a session which needs to be there for almost the entire day, and 2 hours is really too short to understand the intricacies that are involved and how it is interlinked. But both of you really explain the risks that are involved and the risk management in a very lucid manner, the various hedging tools that are available for this, and Pankaj taking us through various those indices, indexes, the charts and the correlations between each other, and how risks are involved over here. So I on behalf, 1 second, feedback, okay, yeah. So participants, it's important that all of you need to submit the feedback. You'll be getting a mail for the feedback and you need to submit that. So I on behalf of Pune branch of WRC, really thank you Maulik sir and Pankaj bhai to spare 2 hours on Sunday morning and addressing us on this very delicate issue, I would say, which can really matter exports and imports in a large manner for any company. And surely we would like to invite you again for maybe a detailed session. Maybe if we can plan a full day session, we would surely love to get you back to address the participants over here. And thanks a lot. Thank you, sir. Thank you so much, Sachin, Pune branch, WIRC, and all the participants. Thank you very much for your time and attention. You have stayed through the entire presentation, means a lot for us, and hope you have taken the value of your time. Do implement some of the things that we have shared today. In case if you still have a doubt, please feel free to reach out to us. Thank you very much. Thank you.